Hello, friends. Today we have come up with another video in which this is the ovule of Cycas revoluta, and we will cut this ovule and we will try to see that the ovule has the integument, and that integument has 3 layers. Okay, in Hindi, if I can explain to you, I can say that this बीजांड, ये प्रत्येक बीजांड जो है उसके चारों तरफ इंटेग्यूमेंट होता है, इसे अध्यावरण कहते हैं। और ये अध्यावरण बहुत ही मोटा है, लेकिन इनमें 3 परत होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, बाहरी परत जो होता है वह मांसल होता है। इफ़ यू कट दिस, यू सी इट इज़ फ्लैशी, राइट? यू कैन सी दिस, कैन यू सी दिस? दिस फ्लैशी and some orangish color like things are coming out. If you cut this, it's very fleshy, right? This is the fleshy region. This is the fleshy region. Can you see this? This is the fleshy part. So this is, you are removing the, this is called the outer अध्यावरण। बीजांड का अध्यावरण जो है, ये बाहरी जो सबसे अध्यावरण है वह फ्लैशी होता है। That means the integument is fleshy. The first layer is very fleshy. Then the मध्य पर जो परत होगा, जो मिडिल वाले होंगे, that is stony. If I can show you the stony part, you see the fleshy part I am removing, and then after removal of the fleshy part, see I am removing the fleshy parts. Okay, I am removing the fleshy. This is the micropylar region, and I am removing the fleshy parts. Can you see it? Yes. I am removing the fleshy parts. Can you see it? Yes. I am removing the fleshy part. And see, the stony part is coming now. Can you see the middle portion? Yes. So remove all the, so I am removing all the fleshy parts. And after removing the fleshy part, so just a minute, you need to give me some time. So if I remove the fleshy part, I am getting a slight yellowish structure in the middle, that is stony. अस्थिल part आपको जो मध्य वाला भाग है वह थोड़ा स्टोनी होता है, बहुत कड़ा होता है। वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से। I want to show you that middle portion is very very hard. You can, if you cut this by your own experience, it will be much better. My purpose is to make you understand things rather than memorizing the things. Okay, so if you see this, it is very very hard. If you can press this, you cannot press it. It's very very hard. Okay, and this is the middle stony, मध्य परत है अस्थिल, और भीतरी मांसल परत जो होता है। अब देखिए, इसे भी अगर काटेंगे, इस स्टोनी के अगर काटेंगे तो उसके अंदर फ्लैशी लेयर होगा। लेकिन एक बात हमें जानना चाहिए कि इसके चारों बगल के कवर को तो हम लोग कर दिए अध्यावरण, लेकिन हर एक बीजांड के केंद्र में एक बीजांड काय होता है, न्यूसेलस। So if you, within this outer is fleshy, middle is stony, and if you cut that, inside one is also fleshy. You see, inside one is also fleshy, but you see the micropylar region I have cut this, and inside the fleshy, the outer is fleshy, middle is stony, inside is also fleshy, and in the center there is a what? बीजांड काय, that we call it nucellus. So हर एक प्रत्येक बीजांड के मध्य में एक बड़ा सा बीजांड काय nucellus होता है. So you will get the nucellus. So the inner fleshy layer, actually the inner fleshy layer, जो भीतरी जो मांसल परत है, वो किससे संलग्न रहेगा? बीजांड काय से, न्यूसेलस से संलग्न रहेगा। इसका मतलब क्या है? आप देखिए, ये जो है
ये जो इनर का जो फ्लैशी रीजन है वह आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये तो या तो कंज्यूम्ड हो गया होगा, और वह देखिए इनर का फ्लैशी पार्ट जो है वह न्यूसेलस से मतलब बीजांडकाय से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर मैं इसे तोड़ करके दिखाने की कोशिश करूँगा आपको कि यह कैसा होता है अंदर में, राइट। और इस तरह से अगर हम काटें तो देखिए इतना जो जमा किए हैं हम लोग, दिस वन इज़ द आउटर फ्लैशी, दिस वन इज़ द मिडिल स्टोनी, एंड इनर लेयर इज ऑल्सो फ्लैशी, बट दैट फ्लैशी लेयर जो है वो क्या कर लिया है, वो किसके साथ अटैच्ड है, दैट इनर फ्लैशी लेयर इज अटैच्ड टू द न्यूसेलस, राइट। हम लोग ये कह सकते हैं कि, लेकिन यहाँ पर जो है बीजांड द्वार के पास ये माइक्रोपाइल जो रीजन है, वहाँ पर बीजांडकाय का जो शीर्ष वाला भाग है, दैट मीन्स द एपिकल रीजन ऑफ द न्यूसेलस, उसे अगर छोड़ दें तो क्या होगा कि जो इंटेगुमेंट है दे आर फ्यूज्ड टू द न्यूसेलस एक्सेप्ट नियर द माइक्रोपाइलर रीजन, बिकॉज इफ दे आर also attached near the micropylar region, then how will the opening be created, right? So we can say that ki integument, right, are not attached to the nucellus at the micropylar end. Okay, so and then later you can understand that how the pollen enters here and what is the nucellus, that is Bijandkai, is inside it, and how megaspore, functional megaspore, is formed there, and then how the archegonia and female gametophyte are present, and how inside the archegonia the egg is there, and then fusion between the male and female nucleus take place and the embryo develops. So these things we will study later, but my purpose here was to show you that how if we cut the ovule of the cycas, the integument, basically the outer covering is called integument. Integument has, that is called in Hindi Adhyavaran, it has 3 layers. Outer is fleshy, these are the fleshy outer coat, you have removed it. This is the stony, that is the light yellow color, and the inner fleshy layer is fused with the female gametophyte. Okay, and you will see it as a dry membranous covering. Okay, so here inside you can see some dried if I can break this, here you can see the dried covering. So it is due to this stony layer, it's very difficult to cut the ovule, right? So but anyhow I could show you you can see the inner layer is also there. If you can focus here, there is inner is there is attached with the female gametophyte, right? And if I can show you here, probably, wait a minute. Yes, I can see something. You can see something. Okay, here, can you show them to here? Can you bring it here? Yes. Can you see the inner layer? Can you see the inner layer? Yes, the inner layer is fused with the female gametophyte, right? And maybe through the diagrams you can understand what is female gametophyte and what is the nucellus,
and where how two archegonias are present, and how two archegonias are present there, and inside the archegonia eggs are there. Okay, thank you.